गुड मॉर्निंग वेलकम टू वानिक स्मार्ट क्लासेस। आज आम डिस्कसन करवा एसआई पुलिस बा पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर सम रिलेटेड क्वेश्चंस आउ आम 30टा क्वेश्चन अच्छी गोटे पर गोटे आम डिस्कसन करवा। देखो प्रथम क्वेश्चन अच्छी जे कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यूजर्स हु ट्रैवल आर नोन एज डैश माने कौन ये जो कंप्यूटर गुड़े रहा आदर गोटे इजिली ट्रैवल कर तो आदर इजिली ट्रैवल कर सुपर कंप्यूटर के इजिली ट्रैवल कर मिनी कंप्यूटर कर फाइल सर्वर कर गोटे हूँ लैपटॉप जी कि लैपटॉप आम जदि नेबा ताले इजिली आम गोटे जगार आ गोटे जगार ट्रांसफर कर कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यूजर्स दैट हु ट्रैवल आर नोन एज लैपटॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंट बाय ए सिंगल बाइट। तो हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंट बाय ए सिंगल बाइट। 1 बाइट is equal to 8 bit. How many value means value is equal to 2 to the power 8 bits, that is equal to 256 bits, 0 to 255. यदि क्वेश्चन पड़ता हाईएस्ट वैल्यू बा टोटल पड़ी हाउ मेनी वैल्यू तो हाउ मेनी वैल्यू ये आंसर करवा 256 दैट इज टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू इक्वल टू 256, लोएस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 0, लोएस्ट वैल्यू इक्वल्स टू 0, हाईएस्ट वैल्यू इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू इक्वल टू 255। ये भाया क्वेश्चन आसो ना एमती भी क्वेश्चन आसे जदि हाउ मेनी बीट पैटर्न और highest bit pattern of 7-bit coding system। क्वेश्चन ये भी आसे जे हाउ मेनी बीट पैटर्न ऑफ ए 7-bit कोडिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन जिते बड़ा आसो तुम्हें कौन कर सब ना 2 to the power 7 लगेदेव 2 to the power 7 है 128, 120 रेंज होची 0 to 127, टोटल वैल्यू है 128, लोएस्ट है 0, हाईएस्ट है 127। तो ये क्वेश्चन था हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल बाइट। आंसर केते करियो ना 256। जदि ये कौन था ना हाईएस्ट था 255 होता, लोएस्ट थिले आउ 0 करता जेहेतु ये टोटल 50 से करियो ना 256। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए स्मॉल सिंगल साइड नेटवर्क। स्मॉल सिंगल साइड नेटवर्क स्मॉल सिंगल साइड नेटवर्क। स्मॉल सिंगल साइड माने ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क जाउची, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क कहले लान, नॉर्मली लान, मैन आउट अच्छी 1। लान जान लोकल एरिया नेटवर्क, मैन है मेट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया होची इट कनेक्ट ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, small geographical area like building, airport, university and their campuses। सबुठ छोटो नेटवर्क होची लान, मैन होची मेट्रोपॉलिटन एरिया, वाइड एला वाइड मैंने लार्ज नेटवर्क कहले 1, स्मॉल कहले लान। तो लान नो रेंज होची केतना 0 to 10 किलोमीटर रेंज, 0 to 10 किलोमीटर रेंज। तो ये अच्छी क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए स्मॉल सिंगल साइड नेटवर्क। तेणु ये आंसर करवा लान, लोकल एरिया नेटवर्क।
Rules for programming language is a formal description of dash rules for programming language. देखो rules for programming language को कहा जाए syntax. Syntax कौन? Now it is the set of rules. It is the set of rules that express the logical steps of a solution algorithm. It is the set of rules that express the logical step of a solution algorithm. It is also called a way of executing the commands. Command मु केमती execute तार way को कहा जाए syntax. तो एटी क्वेश्चन अछि ना rules for programming language is a formal of answer को करे ना syntax. Next question थिला unsolicited email junkie mail called dash. Unsolicited email junkie mail called dash. Actually कोठी जाएंगे स्टोर वे ये भी क्वेश्चन पड़े unwanted message are stored in a dash. एटा होची ईमेल गोटे क्वेश्चन टा ईमेल क्वेश्चन आसे तो एठु करे करना aquaz unsolicited email junkie mail called spam. तुम्हें जब वायरस होची vital information resource under siege theft ला किसी stealing करा को theft को आ जाए. A draft कौन क्वेश्चन आसे ना draft क्वेश्चन आसे when a message is not ready to send. When a message is not ready to send. When a message is not ready to send, it is typically stored in dash. जदि गोटे मेसेज रेडी है सेंड करने एक्चुअली कौटी स्टोर हुए से जगह आंसर कौन कहता ना ड्राफ्ट रे स्टोर हुए आ गोटे बाकी रहा स्पाम देन अनसोलिसिटेड ईमेल जंकी मेल कॉल्ड स्पाम. नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज डैश. को लैंग्वेज को हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाए. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मीन्स इट फॉलो रूल्स ऑफ UPS कहा जाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आदरे पांचटा रूल्स अच्छी डाटा एनकैप्सुलेशन, डाटा पॉलीमॉर्फिज्म, डाटा बाइंडिंग, डाटा अब्स्ट्रैक्शन और डाटा इनहेरिटेंस. तो ये पांचटा को जी फॉलो करियो ताको कहते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. तो आ भीतर किए फॉलो करे ना बेसिक किछि फॉलो करेनी. बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक लैंग्वेज एटा होची स्टडी फॉर बिगिनर्स. स्टडी फॉर आर भी क्वेश्चन आसे डैश लैंग्वेज यू स्टडी फॉर बिगिनर्स. जेते स्टडी फॉर बिगिनर्स कछि सेठी आंसर करियो बेसिक. फटान कोन ना इट वाज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज. इट वाज द फर्स्ट हाई लेवल प्रथम हाई लेवल लैंग्वेज फटाल. कोमल तुम्हें जानथो कमर्शियल लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज आ गोटे रहा बाकी देखिए जाभा. जाभा को आम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कही था. ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज अच्छी आंसर कौन जाभा. आउ अल्टरनेटिव क्वेश्चन आसे डैश इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज से जगह आंसर कौन है जाभा. तो ये आंसर है जाभा. Protocol that gives us error message in an email. एटा क्वेश्चन अछि ईमेल. जदि आमे ईमेल किछि एरर मेसेज आसी आ भितर को प्रोटोकॉल साहाय्य एरर मेसेज दिया जाए. आगे गोटे गोटे प्रोटोकॉल देखिबा एक्चुअली कोन पई सब यूज करा जाए.
पॉप कौन पाई पॉप रो फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आर काम है कौन ना रिसीविंग एन ईमेल, रिसीविंग एन ईमेल। एसएमटीपी है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कौन पे यूज करना सेंडिंग एन ईमेल। एफटीपी कौन ला फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जदि गोटे फाइल को गोटे सोर्स रो गोटे सोर्स जाउ सेठी दरकार एफटीपी। तो बाकी रहला कौन ना आईसीएमपी। आईसीएमपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ए प्रोटोकॉल दैट गिव्स अस एरर मैसेज इज कॉल्ड आईसीएमपी। तो आईसीएमपी इज गोटे प्रोटोकॉल जदि किसी एरर मैसेज दी आ साहाय्य आम एरर मैसेज पाई था। तो हियर इज राइट आंसर इज आईसीएमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेंड एंड मैसेज इज नोन एज डैश। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मैसेज इज नोन एज डैश। देख बर्तमान कौन अच्छी ना फर्स्ट अच्छी डाउनलोड। डाउनलोड डेफिनेशन होची it's a process to receiving information from remote system or internet to our local system। remote system or internet to our local system जदि इंटरनेट रू किछि इंफॉर्मेशन आमे आम कंप्यूटर को ट्रांसफर करे दैट इज द मीनिंग ऑफ डाउनलोड। अपलोड है तार रिभर्स जदि आम कि मेसेज लोकल सिस्टम और इंटरनेट को सेंड कले से अपलोड। आउ दुटा रहा डाउनलिंक आउ अपलिंक। आ भितर कौन डिफरेंस नो डाउनलिंक है इन ऑल कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेंड एंड मैसेज इज नोन एज डैश। जदि आम कम्युनिकेशन सैटेलाइट रू मैसेज रिसीव करवा सेटा डाउनलोड जदि आम सेंड करवा सेटा अपलिंक। तेणु आंसर ये कौन है डाउनलिंक। In communication satellite send and message is known as downlink। Next question है a device operating at the physical layer is called dash। physical layer is called dash। एटा कौन ना related to question OSI model। OSI model ला question टा OSI रा 7 layer अच्छी physical layer फिजिकल पर डाटा लिंक लेयर डाटा लिंक पर नेटवर्क नेटवर्क पर ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट पर सेशन सेशन पर प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन पर एप्लीकेशन। जेहेतु लेयर अच्छे तो आ भर फिजिकल लेयर कौन यूज हुए डाटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर कौन यूज हुए से क्वेश्चन पड़े देखिए आम कौन कौन यूज करा जाए। देख तो फिजिकल लेयर जनरली कौन यूज है ना रिपीटर यूज करा जाए लिपिटर यूज करा जाए फिजिकल लेयर आ ब्रिज राउटर यूज करा जाए नेटवर्क लेयर एटा सब टिके मन रखा पड़ो कारण एठी आम डायरेक्ट आंसर करना रिपीटर। रिपीटर यूज्ड इन फिजिकल लेयर। आर भी क्वेश्चन आसे डैश इज ए सिग्नल डिग्रेड डैश इज ए सिग्नल डिग्रेड used to extend the length of the network। dash is a signal degrade used to extend the length of the network। तामने नेटवर्क लेंथ को एक्सटेंड करा खेले कौन यूज करा ना से जगह में आंसर करवा रिपीटर। तो दुईटा क्वेश्चन फिजिकल लेयर बेसिकली आसे रिपीटर ये गोटे क्वेश्चन आ गोटे क्वेश्चन ये मुझे ऑलरेडी पकई देखिए डिवाइस ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर इज कॉल्ड repeater। here the right answer is repeater। next question menus are part of a dash। menus are part of a dash माने कौन मेनू ड्राइवन एक्चुअली कौन अच्छे मेनू इज ए पार्ट ऑफ डैश। देख मेनू है इट्स ए सॉफ्टवेयर जेहेतु फास्ट आंसर है हार्डवेयर एटा हम भी ना मॉनिटर भी केबे हम ना कारण मॉनिटर डिस्प्ले करे ना और रहा कौन स्टाटस बार
स्टाटस बार भी नहीं बाकी कौन रहा विंडोज कहीं मेनू इज ए पार्ट ऑफ विंडोज एप्लिकेशन सिस्टम ना इन केस ऑफ विंडोज एप्लिकेशन सिस्टम यूजर always deals with a certain object called icon तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रे आमे सब आइकन सहित डील करूथिबारु आकु कहा जाए GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जेहेतु आमे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करछो विदाउट ग्राफ रे आम किसी भी इंटराक्ट करि परिबा नाही सेति पय आंसर हैला विंडोज हियर इज द राइट आंसर इज विंडोज मेनूज आर पार्ट ऑफ द डैश ना पार्ट ऑफ द विंडोज नेक्स्ट क्वेश्चन ए डैश कैन मेक इजियर टू प्ले गेम्स माने गेम जनरली यूज करा खेले हमको कौन दरकार ना माउस दरकार जॉयस्टिक दरकार ना कीबोर्ड दरकार पेन दरकार देखो ये तीनटा जिनस आमर निहाती दरकार माउस भी यूज करि पारिबा जॉयस्टिक भी यूज करि पारिबा कीबोर्ड भी यूज करि पारिबा पेन तो यूज करिया दरकार नाही ये तीनटा जिनस यूज करा सिकित पचारची डैश मेक इजियर टू प्ले गेम्स से जगह हम आंसर करे ना जॉयस्टिक so here the right answer is joystick the both are pointing device तो आंसर कले joystick it make easier to play games dash is stored saved linked hypertext document quick access for future use means जदि आम कि वेबसाइट एंट्री कले भितर को जाऊे तो पर्टिकुलर एड्रेस को आम स्टोर करके तो डायरेक्ट आम से जावाई कौ ऑप्शन आ भर यूज कर देख ये तीनटा ऑप्शन डिस्क्रिप्शन पर आम आंसर यूज करवा कौन देख कुकीज और हिस्ट्री बोथ आर सेम कुकीज आर हिस्ट्री बोथ आर सेम मीन्स कुकीज माने कौन ना इट इज यूज टू स्टोर visited website it is used to store visited website तो visited website को यदि तुम्हें स्टोर करे से तार ऑटोमेटिकली स्टोर करे को वेबसाइट तुम्हें सब विजिट करछो दैट इज विजिटेड वेबसाइट तो कुकीज तो हबनी कि हिस्ट्री हबनी बाकी रहला कौन ना होम पेज हबा ना इट द मेन पेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बा स्टार्टेड पेज ऑफ एनी ब्राउजर स्टार्टेज पेज है होम पेज तो सेति पे आंसर कौन ना बुकमार्क काम होची it is used to store saved linked hypertext document quick access for future use माने जदि आमे बुकमार्क रे स्टोर कले नेक्स्ट डे आसिले आमे डायरेक्ट से बुकमार्क को लिंक खोल के डायरेक्ट आमे से जगह को जाई परिबा सेति पय हियर इज द राइट आंसर इज बुकमार्क नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डाटा स्ट्रक्चर कौन इंक्लूड करे array list stack all the above it is the application of C or C++ program also python program ର application होची data structure तो data structure साहाଯ୍य हम कौन परिबा ना array भी तैयारी करि परिबा list भी तैयारी करि परिबा stack भी तैयारी करबा सेठो आंसर करना all the above करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्कैनर स्कैन्स एक्चुअली स्कैनर्स कौन का स्कैन करे तो स्कैनर इज ए इनपुट डिवाइस तार काम होची यूज टू स्कैन बा यूज टू कौन दिया हमको ना सॉफ्ट कॉपी रेफर करे जेमती स्कैनर रिलेटेड टू सॉफ्ट कॉपी सेमती हुआ प्रिंटर रिलेटेड टू हार्ड कॉपी यदि स्कैनर सॉफ्ट कॉपी बाहर प्रिंटर हार्ड कॉपी बाहर एक्चुअली स्कैनर्स कौन स्कैन कर पारियो ना स्कैनर कौन स्कैन ना इमेज को भी स्कैन कर पारियो टेक्स्ट भी स्कैन करबा सेति पई बोथ इमेज एंड टेक्स्ट आंसर कौन करबाटी ना बोथ इमेज एंड टेक्स्ट इमेज को स्कैन कर पार एंड टेक्स्ट को स्कैन कर पारियो तो ये स्कैनर स्कैन चार्ट ना बोथ इमेज एंड टेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है OSS stands for माने OSS open source software OSS stands for open source software here is the right answer is open source software is the full form of OSS
नेक्स्ट क्वेश्चन थला एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर फंक्शन ऑफ डैश लेयर एनक्रिप्शन आउ डिक्रिप्शन एनक्रिप्शन कौन डिक्रिप्शन कौन ना एनक्रिप्शन माने ला एनक्रिप्शन इट्स ए प्रोसेस टू कन्वर्ट plain text to cipher text plain text to cipher text or scrambled text plain text to cipher text or scrambled text and the reverse process is known as decryption. So reverse process is known as decryption. These are the four layers of OSI model. OSI model ला बर्तमान चार्टा लेयर अच्छे आदि कहा साजर बा कौथरे हमें लेयर यूज करूँ ट्रांसपोर्ट रे कौन यूज करूँ ना TCP और UDP यूज करा जाए सेशन लेयर रे बैकबोन प्रेजेंटेशन लेयर हमें एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन यूज करूँ तो एप्लीकेशन लेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज करूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स नाली यूज करा जाए तो ये हम आंसर करिए ना एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आर फंक्शन ऑफ डैश लेयर ना एनक्रिप्शन आर फंक्शन डिक्रिप्शन ऑफ फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन तला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजरमेंट यूनिट इन एमएस वर्ड तो आ भीतर कोटा मेजरमेंट यूनिट नुहे मेजरमेंट यूनिट माने जदि आमर रूलर लाइन है ये आम कि गोटे मेजरमेंट यूनिट करता जे कौटी आरंभ कौटी शेष ए जगार किसी दिया हेले आम मेजरमेंट यूनिट करथाउ तो मेजरमेंट यूनिट कौन केतटा अच्छी ना गोटे अच्छी इंच अच्छी डिफॉल्ट कौन थाए ना इंच रे डिफॉल्ट मेजरमेंट इंच अच्छी आउ सेंटीमीटर अच्छी मिलीमीटर भी अच्छी आ पिकास अच्छी आउ पॉइंट अच्छी तो आ भितर ये चार चार्टा ऑप्शन भितर जब एक्स्ट्रा कोड़ा थी से तुम्हें बाहर करदेव पॉइंट्स आर पिक्सेल्स कह जाए ताको पॉइंट्स आर पिक्सेल्स तो बाकी कौन रहा ना मीटर तो मीटर इज नॉट द मेजरमेंट यूनिट ऑफ रूलर इन एमएस वर्ड हियर द राइट आंसर इज मीटर मीटर फैसिलिटीज बा मीटर यूनिट एथरे नाई से आम मीटर को काण करदेवा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड at least 1 GB ऑफ डाटा तो एटलिस्ट 1 GB डाटा किए होल्ड करियो हार्ड डिस्क तो मिनिमम न हार्ड डिस्क तो मैक्सिमम जीबी होल्ड करे तो एटा भी ट्रू हम जे 1 GB अधिका डाटा के हार्ड डिस्क होल्ड कर पारछि. CD रो हमर कैपेसिटी केते अछि ना CD रो हमर कैपेसिटी 650 MB टू शिफ्ट 52 MB जीबी जेहेतु अपर लिमिट अच्छी 1 GB तो ये भी कहते हैं ना ट्रू हम आउ फ्लॉपी डिस्क कैपेसिटी जनरल कैपेसिटी कहते ना 1.44 MB ये तो केबे हम भी नहीं कारण सबुठारु कम डाटा स्टोर करके ना फ्लॉपी डिस्क कैपेसिटी मात्र कहते ना 1.44 MB तो हियर इज द राइट आंसर इज बोथ तो बोथ तो नहीं जदि बोथ बी एंड सी अच्छी तो बी रे वैल्यू कहते ना बी रे वैल्यू कहते ना बी रे वैल्यू केते हम 650 MB टू 1 GB नियरली इक्वल टू 1 GB ये ला 1.44 MB तो बोथ बी एंड सी तो केबे हवार नहीं तो आंसर कौन हार्ड डिस्क कारण हार्ड डिस्क कैन होल्ड एटलिस्ट 1 GB ऑफ डाटा मात्र 1 GB अधिक डाटा से रखी पार एटलिस्ट अधिक भी रखी पार किंतु आर होची फास्ट हाईएस्ट होची केते 1 GB तो एटा हबन सेति पे आंसर करे ना हार्ड डिस्क. What is the correcting errors in program? What is the correcting errors in program? Program रे जो error आसे ताको हमें कौन कहा जाए देखो इट अछि इंटरप्रिटिंग ट्रांसलेटिंग डिबगिंग कंपाइलिंग आर सब मीनिंग कौन सब थाए देखो इंटरप्रिटिंग कंपाइलिंग दिस टू इज ए ट्रांसलेटर यूज टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू मेसिन लेवल लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा आ ट्रांसलेटिंग रो मीनिंग इज ट्रांसलेट करिवो तो बाकी रहा कौन ना डिबगिंग इज ए प्रोसेस टू बा करेक्टिंग एरर्स इन प्रोग्राम इज नोन एज डिबगिंग हियर द राइट आंसर इज कौन करिवो ना डिबगिंग इज ए प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर्स इन ए प्रोग्राम.
नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा द प्रिंटिंग लेआउट ऑफ फॉर्म विंडो इज नोन एज डैश एक्चुअली एटा एक्सेस रो क्वेश्चन तो क्वेश्चन अच्छी कौन द प्रिंटिंग लेआउट ऑफ फॉर्म विंडो इज नोन एज डैश जदि आम फॉर्म विंडो को प्रिंट करा चाहिए ताको कौन कह जाए रिपोर्ट कह जाए रिपोर्ट इट्स ए प्रिंटिंग लेआउट ऑफ फॉर्म विंडो देख बर्तमान टेबुल है इनपुट क्यूरी है फेचिंग अपडेटिंग अल्टरिंग आ फॉर्म है डिस्प्ले कौन डिस्प्ले करियो ना क्रिएशन फेचिंग अपडेटिंग अल्टरिंग बाकी रहा कौन ना रिपोर्ट इज ए प्रिंटिंग लेआउट ऑफ फॉर्म विंडो आंसर है रिपोर्ट for creating a document use dash command at file menu for creating a document actually creating a new document तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करिया को हेले हमें फाइल मेनू कौन सिलेक्ट करिया पड़ियो देखो फाइल मेनू अछि ओपन न्यू सेव आउ क्लोज ओपन जानिछ ओपन माने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट सेव माने आफ्टर क्रिएशन यू कैन सेव इट क्रिएशन पर सेव करो क्लोज माने डॉक्यूमेंट क्लोज बाकी रहा कौन ना न्यू फॉर क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट यू कैन यूज न्यू कमांड एट फाइल मेनू नुआ कमांड तुम्हें क्लिक कले गोटे डॉक्यूमेंट तुम्हें ओपन करि पारिबो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करि पार हियर द राइट आंसर इज न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टू इंसर्ट 3 कॉलम्स इन बिटवीन ए एंड बी यू शुड टू इंसर्ट 3 कॉलम्स इन बिटवीन ए एंड बी माने एटा रिलेटेड टू एक्सेल क्वेश्चन एटा ए एटा बी सी डी 1 2 3 अच्छे एमती तो आम ए आउ बी मझे 3टा कॉलम इंसर्ट करने चाहूँचे एक्चुअली क्या को आम सिलेक्ट करवा जदि आम सिलेक्ट ए कले ए रो बाँ पटे आड हम सिलेक्ट ए एंड बी करा जदि ए एंड बी को सिलेक्ट करा भी बाँ पटे आड हम किंतु जदि सिलेक्ट बी सी डी करवा तो बी सी डी खाली बी डिफरेंस कौन ना जदि तुम्हें खाली सिलेक्ट बी कर तो सिलेक्ट बी कले बाँ पटे गोटे आड हम किंतु जदि आम सेलेक्ट बी सी डी करदे ये 3टा कॉलम को आम सिलेक्ट करदे करिक जो आम इनसर्ट मारे तो बाँ पटे ऑलरेडी 3टा कॉलम इनसर्ट हो क्वेश्चन था टू इनसर्ट 3 कॉलम्स बिटवीन ए एंड बी यू शुड यूज कौन करे ना सिलेक्ट बी सी डी जदि आम बी सी डी 3टा को सिलेक्ट करवा तो डायरेक्ट आम बाँ पटे के आड कर 3टा आड कर एक्सेल क्वेश्चन तो हियर इज द राइट आंसर इज सिलेक्ट बी सी डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट डज पॉप स्टैंड्स फॉर पॉप स्टैंड्स फॉर डैश पीओपी स्टैंड्स फॉर ना पीओपी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल राइट आंसर इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बी 23 नंबर है बी आंसर Next question, a mistake in an algorithm that causes incorrect result is known as dash. It question as algorithm. Algorithm माने it is the set of well-defined instructions. It is the set of well-defined instructions for completing a task from initial step to the final step and all the steps are interrelated and interdependent to each other.
Here is the definition of algorithm. The concept of algorithm was created by John Napier. तो algorithm syntax अनुसार कौन कहला ना it's an well defined instruction that completing a task from initial step. This is also called step by step. It's also called step by step program. तो step by step program जेहेतु हेइथिबार एटी को प्रकार एरर जनरली देखा दे सिंटैक्स एरर देखा देबो नाही कंपाइलिंग एरर नाही मशीन एरर भी आसीबो नाही एटी को एरर आसे ना लॉजिकल एरर. A mistake in an algorithm that causes incorrect result is known as logical error. Answer है logical error. एक क्वेश्चन भी आउट आसे जे dash error is not easy to debug. Dash error is not easy to debug. कोई एरर आमे सहज रे डिबग करि पारिबा नै सेटि आंसर कोन करिया ना लॉजिकल एरर. Generally logical error दुईटा रे क्वेश्चन आसे mistake in an algorithm that causes incorrect result is known as logical error. Also another question is that dash error is not easy to debug, also logical error. Here the right answer is logical error. देखो next question. Identify the incorrect topology. Incorrect network topology. Topology कहले कोन? Topology. Topology माने हला it's a way of connection. It's a way of connection among the autonomous computer. It's a way of connection among the autonomous computer. Computer को आमे केमिति connections करिबा that is topology. According to the architecture, it is of following types. According to the architecture, it is of following types. तो आर्किटेक्चर अनुसार टोपोलॉजी क्लासिफाई करा जाय अछि कोन कोन अछि देखिबा ना फर्स्ट ला बॉस टोपोलॉजी ताबला रिंग ताबला ट्री तापर स्टार तापर मेस तापरला हाइब्रिड. तो आ भितरु एतिकी टोपोलॉजी अछि देखिबा ऑप्शन है आ भितर कोटा नाही. देखो बॉस इट्स ए टोपोलॉजी, स्टार इज आल्सो ए टोपोलॉजी, रिंग इज आल्सो ए टोपोलॉजी, बट P2P is not there. P2P माने peer to peer networking. आपको कहा जाए peer to peer networking is not a topology. Here is the right answer is P2P. Identify the incorrect network topology, that is P2P. Next question देखो. Dash is a process to finding errors in software code. यदि सॉफ्टवेयर कोड रे किछि एरर आसिला ताको हमें कोन पले कंपाइलिंग, टेस्टिंग ना रनिंग ना डिबगिंग. डिबगिंग जानलो यदि किछि प्रोग्राम रे इशू होछि, डिबगिंग. कंपाइलिंग करना प्रोग्राम रे किछि एरर भाले हमें ताको कहबा कंपाइलिंग. और रनिंग करना कंपाइलिंग परे ही आफ्टर कंपाइलिंग देन रन द प्रोग्राम. बाकी रहला कोन टेस्टिंग. Testing is a process to find out error in software code. Testing is a process to find out error in software code. Question भी अलगा प्रकार आसे. The testing is a process. Testing is a process to find out. Testing is a process to find out dash error in software. ये बिड़ा question भी आसे. तो टेस्टिंग गोटे डैश रही पारिबो एठी भी आ गोटे हम डैश रखि पारे. टेस्टिंग इज ए प्रोसेस टू फाइंड आउट डैश एरर इन सॉफ्टवेयर. से जारे हम कोन करिया ना टेस्टिंग इज ए प्रोसेस टू फाइंड आउट कोड एरर इन सॉफ्टवेयर. सेति पय एठी क्वेश्चन देखो डैश इज ए प्रोसेस टू फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड. आंसर अछि कोन ना कोड थिबारु आंसर कोन करबा टेस्टिंग. हियर इज द राइट आंसर इज टेस्टिंग. एई सॉफ्टवेयर कोडटा एठी भी तुमर आंसर करि पारिबो. टेस्टिंग इज ए प्रोसेस टू फाइंड आउट डैश एरर इन सॉफ्टवेयर, दैट इज code error. Here is the right answer is testing. Next question now, what is the number of layers in OSI model? Already मैं तुमको describe करची OSI model. OSI रा full form ला open system interconnection. आधरे कितना लेयर था ना जनरली 17 लेयर जोटा ऑलरेडी तुमको
प्रीवियस क्वेश्चन लिखि सारी तेणु ये आंसर के करवा ना 7 लेयर थाए किंतु जदि इन केस ऑफ टीसीपी आई पइला TCP/IP कंसिस्ट ऑफ केते लेयर ए जार करियो केतेटा ना 5टा लेयर करियो टीसीपी जदि ओएसआई मॉडल कला 7टा लेयर करियो जो टीसीपी मॉडल कले 5टा लेयर करियो। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच शॉर्टकट की इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन माने एटा क्वेश्चन अछि पावर पॉइंट जदि आमे गोटे स्लाइड आमे काम करूछे जदि हमर नेक्स्ट स्लाइडटा दरकार हुए से जगह रे आमे कोटा यूज करबा देखा कंट्रोल एन मानेला न्यू प्रेजेंटेशन मन रखिता न्यू प्रेजेंटेशन आ जदि वर्ड यूज करा न्यू डॉक्यूमेंट जदि एक्सेल यूज करा न्यू वर्कबुक सब अलग अलग न्यू वर्कबुक न्यू डॉक्यूमेंट न्यू प्रेजेंटेशन तो एटा केबे भी हबो नाही बाकी रहला कोन ना कंट्रोल एस माने कोन पय यूज करा जाए सेव पय यूज करा जाए आ उटे के रहला ना कंट्रोल एम माने कोन ना कंट्रोल एम जदि वर्ड रे थांता तला हम यूज करथांदे अलगा ता कोन इंक्रीजिंग इंडेंट स्पेस किंतु जेहेतु आमे पावर पॉइंट रे यूज करछे तो कंट्रोल एम कोन पय यूज करा जाए इंसर्ट न्यू स्लाइड यदि नुआ स्लाइड तुमे इंसर्ट करबो हुई शॉर्टकट के इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन से जार करबो कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फॉर मास मेलिंग डैश इज यूज्ड इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट रे मास मेलिंग पई कोन यूज करा एमएस For mass mailing dash is used to document mass mailing आमे को ऑप्शन आम यूज करबा एटा क्वेश्चन थिला एक्चुअली कार ना एमएस वर्ड मास मेलिंग माने डॉक्यूमेंट जदि मोर दैन वन एड्रेस रे सेंड करि पारिबा सेटा कहबा हमें मास मेलिंग आदर देखो प्रिंट प्रीव्यू रे तो किछि करि पारिबानी प्रिंट प्रीव्यू रे कोन देखिबा ना हाउ लुक लाइक बिफोर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट मर्ज रे तो हेई पारिबनी बाकी रहला केले मेल मर्ज साज रे आमे कोन करिया ना गोटे वर्ड डॉक्यूमेंट को मोर देन वन डॉक्यूमेंट भितरे सेंड करि पारिबा तो राइट आंसर इज मेल मर्ज। What is the shortcut key to open font dialog box? Font dialog box open करिया खेले हम को शॉर्टकट के यूज कर font dialog box करना जो dialog box रे हमें कौन चेंज करे ना font name font style तो से जगह को हमें केमती जाई परिबा ना व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन font dialog box एठी हम यूज कर कंट्रोल एफ हेले कोन आसीबो ना फाइंड आसीबो तेनु कंट्रोल डी इज यूज्ड टू open font dialog box. Here is the right answer is control D. It's a shortcut is used to open font dialog box. This is all about 30 questions related to police SI exam. Thank you. Next video रे हमें पुणी किसी नुआ नुआ क्वेश्चन नहीं कैसबा. Thank you.
लो आज पाजी